happening about transacting those assets, the crypto assets, which we don't recognize as currency. Because currency is that which is backed by a bank, the central bank of the country or the government of that country. So that is yet to happen in our country, and it is going to happen sometime this year. But because the volumes of such transactions outside of this was fairly huge, we also wanted to be sure that, and since there was no regulatory mechanism looking at them, we wanted to make sure money is being, or value of assets being transacted, if they are transacted in an unregulated environment, we were not sure if the, let us say, the FATF's money trail, as they say, travel route, travel line is being tracked at all. And we were not even sure as to how we can keep a trail following of these transactions which were happening. After all, these were electronic codes eventually. So we wanted to be sure, and therefore we did announce that on the income that is generated out of the transactions of these crypto assets will be taxed at 30%. And over and above that, there is a 1% tax deduction at source, which is also imposed on every transaction. So through that, we'll be able to know who's buying and who's selling it. And that 1% is not an additional tax over the 30% that I've imposed. It is only reconcilable with the 30 or with any other tax the person is expected to pay. Essentially, by taxing, we were trying to make sure that we are keeping a trail and also making sure these are going to be eventually compliant with anti-money laundering rules, and making sure that these kind of operations don't end up inadvertently to funding any kind of terror activities. So we wanted to be sure when there was no regulation happening, these activities which were becoming now fairly extensive are kept an eye on, and there should be a financial implication on them, and therefore the tax. It wasn't as if we have legitimized them. We haven't said that this is currency. We haven't said that this has intrinsic value, but certain operations are taxable for this. Again, the risks involved, on which, of course, Ravi Menon elaborated, will have to be differentially approached, because for each user case, the risks can also be different. So as long as the non-governmental activity of the crypto assets are through the unhosted wallets, regulation is going to be very difficult. But cross-border payments will become very effective, yes, through the central bank driven currencies. But even with all this said, unless there's going to be a global approach at regulating, and also an understanding of the technology even as it keeps evolving, to be on the top of things and to have technology-driven solutions to regulate and monitor. Not so much to interfere, but of course to keep an eye that your anti-money laundering. I harp on that very much because I think the biggest risk for all countries across the board will be on the money laundering aspect and also on the aspect of currency being used for financing terror. So it is in these two. Otherwise, I don't see a reason why innovation, such as this in fintech, whose fountainhead or whose source itself is to bypass many of the regulatory. Innovation is always disruptive. I don't look at it as a negative feature. It's a right feature. Innovation is disruptive. But on an essential thing of asset or valuation, which might be monetized for funding other activities which are not so savory, I think regulation using technology is the only answer. But regulation using technology will have to be so adept and so nimble that it has to not be behind the curve, but be sure that it is on the top of it. And that's not possible if any one country thinks that it can handle it. It has to be across. तो देखो फ्रेंड्स, शॉर्ट में यहाँ पर समझा जाए तो निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा, आज देखो उसका एक सेमिनार हुआ था आईएमएफ के साथ, कि वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में टैक्स फिर से उस लोगों ने एक्सप्लेन किया, 30% टैक्स, वो भी एज ए पर ट्रांजेक्शन, जैसे कि लॉस होता है उस पर वो नहीं देखेंगे, प्रॉफिट पर 30% टैक्स। सीधी सी बात है, उसने ये कहा जो टीडीएस है वो टैक्स नहीं है, ओनली ट्रैकिंग के लिए उन लोगों ने 1% टीडीएस रखा गया है। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में उसने ये कहा कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का ज़्यादातर यूज़ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होता है, जैसे कि निर्मला सीतारमन जी ने बताया है। हमें तो पता है कि क्रिप्टो करेंसी का कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, क्या इसका फ्यूचर है। उसने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी है, सही बात है, बट इसका गलत यूज़ ना हो, जैसे कि जैसे मोदी जी ने कहा था कि गलत हाथों से मतलब गलत हाथों में क्रिप्टो करेंसी नहीं लगना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे निर्मला सीतारमन जी ने वही कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में इसका यूज़ होता है तो सबको केवाईसी करना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि हमारा इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, उसको पता करने के लिए सभी का केवाईसी लेना ज़रूरी रहेगा। मतलब जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है सभी का केवाईसी होना ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई बंदा ट्रांजेक्शन कर पाएगा, वरना ट्रांजेक्शन होने नहीं चाहिए। केवाईसी के बिना किसी का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो हम कोई बिटकॉइन को कहीं सेंड करना चाहते हैं तो हमारा भी केवाईसी होना ज़रूरी है और सामने वाले बंदे का केवाईसी होना ज़रूरी है, ताकि दोनों को ट्रैक कर पाए कि किसने किसको भेजा, क्योंकि इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। साफ साफ इसका कहना ये था। और देखेंगे हम लोगों को ध्यान में लेंगे कि इससे क्या नुकसान है और इससे क्या फ़ायदा है, उस तरीके से ये लोग रेगुलेशन आने वाले टाइम में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लास्ट में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन को ऑल पर क्लिक करो। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ, डेली अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन क्रिप्टो स्कूल नेम का एक ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पर डेली एक मिनट में मतलब जो भी न्यूज़ अपडेट जैसे आता है आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचेंगे। कोई भी कंट्री में बिटकॉइन अडॉप्शन होता है, क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन होता है, बैन होता है, जो भी होता है, जितनी भी न्यूज़ अपडेट है सभी न्यूज़ अपडेट यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम में टाइम टू टाइम वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलेंगी और फ्री में कॉल्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ आज हमारे जो स्पॉन्सर है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो MEXC हमारे स्पॉन्सर है। यहाँ पर इसके एक्सचेंज के बारे में हम बातचीत करें तो P2P से इंस्टेंटली आप UPI हो, बैंक से हो,
सभी से डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हो। और इसका यूज़ करना मैं क्यों आपको ये शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्रिप्टो करेंसी नई लिस्ट होती है तो सबसे पहले यहाँ उम्मीद ज़्यादा रहती है कि ये एक्सचेंज में सबसे पहले लिस्ट हो। तो जो भी करेंसी नहीं आती है तो सबसे पहले एमएक्सी में ही हमें देखने को मिला है, और मीम कॉइन भी देखा था तो एमएक्सी में ही देखने को मिला है। और यहाँ पर एक और ऑफर चल रहा है कि यहाँ पर से आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो $1000 का आप $1000 का फ्यूचर ट्रेड का बोनस क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ से आप फ्यूचर ट्रेड भी करके एक अच्छा खासा बोनस भी कमा सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना।